اللہ اکبر وللہ الحمد الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa education. Respectfully invite Mufti today. These young minds are seeking for Bashar sir to join us on the stage. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان گلاباس چوملا زوال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ. This is Said Mudabbra, a proud student, a proud leader, presenting Alpha English Academy. There is a beautiful thought that I like. A child's mind is not a container to be filled, but a fire to be kindled. Today, I, Zainab, do not just stand before you as a student. I stand as a witness, as a reminder, and as a Muslim girl who wants to shake your hearts away. Because what I am about to speak is not just a topic. It is the matter of salvation. It is the matter of Jannat or Jahannam. It's about Salah. Place on the stage The greatest personality ever walked on the surface of the earth, Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alayhi wa sallam, has talked about who among the human beings is the best. He did mention stating, خَيْرُكُمْ مَنْ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا وَأَخْلَاقًا. The best among you are those who have the best manners and character. No doubt بچہ ہر ایک لینگویج، ہر ایک ایجوکیشن، ہر ایک کوالیفیکیشن، ہر ایک ڈگری لے لیتا ہے، لیکن ایک کنٹری سے دوسری کنٹری وزٹ کرنے میں یہ لینگویج ہی اس کو ہیلپ کرتی ہے. ہمیں اپنے ان بڑوں کا احترام عزت کرنا بہت ضروری ہے. ایک بچے کو چاہے وہ اپنے ماں باپ، اپنے استادوں، اپنے بڑوں کی عزت کریں. جب یہ چیزیں ان میں ہوتی ہیں تبھی وہ کامیاب بنتے ہیں. In Alpha English Academy, we not build only fluent speakers, but we also build confident personalities ready to face the world. In today's world, English is not only a language, it's a tool of expression, communication and growth. In Alpha English Academy, where students speak with clarity, confidence and purpose. کو پڑھنا ہے. Moral education, the rules and the regulation and the character of Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have to follow this. مگر آج کے زمانے میں یہ انقلابی زمانہ ہے. آج آگے بڑھنا ہے، ہمیں کنیکٹڈ ہونا ہے، پھر ہم اپنی دین کی بھی خدمت کر سکتے ہیں اور لوگوں کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. اگر محدود تھا وہ صرف پنی کاشر، حالانکہ ایسی پہلے گوڑا اپنی کشمیر جو مدر ٹنگ جو ہماری ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ضروری ہے، وہ نہیں چھوڑنا. مگر لینگویجوں کا یہ مقصد سیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو مقصد ہے، جو ہم کریں گے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، تو اسے ہم اچھی طرح سے کر پائیں گے. دیکھو اگر مفتی حمید صاحب اور باہر کہیں جائے گا، وہاں تو وہ اردو نہیں سمجھتے ہیں، کشمیری نہیں سمجھتے ہیں، یا عربی بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ انگلش بول کر وہاں ان کو اچھی طرح سے دعوت دے اور وہ ان کو اچھی طرح سے اسلامی جو خدمات ہیں انجام دے سکتے ہیں. یہی جنون، یہی خواب ہے ہمارا، کہ یہی جنون، یہی خواب ہے ہمارا، وہاں چراغ جلانا جہاں اندھیرا. Alhamdulillah, today, by the hands of Maulana Sahab, we inaugurated this branch, the fourth branch of Alpha English Academy,
and really grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, really grateful to Maulana Sahab, to all their esteemed parents, to all their esteemed personalities of this native, and all the people who have come from across the world. I really respect you. I really appreciate your coming. Alhamdulillah, it's really an honor for us that we have really made it. It's beautifully said कि खुदी से खुद का अंदाजा नहीं होता, कि खुदी से खुद का अंदाजा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी ताजा नहीं होता. आज अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है कि आज हमने जो हमारा मिशन है अल्फा इंग्लिश अकेडमी का, जम्मू एंड कश्मीर में क्राफ्ट करना फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स और डायनेमिक पब्लिक स्पीकर्स, फ्रॉम बेसिक स्टूडेंट लेवल से लेकर एम्प्लॉय तक, टीचर्स तक, हर प्रोफेशन को हम यहाँ पर ट्रेन करते हैं. हमारी एकेडमी का यही मकसद है कि हम हर एक प्रोफेशन को, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे किसी भी तबके से आते हो, हम यहाँ पर उनको ट्रेन करते हैं, स्टेज पर उनको सिखाते हैं. अंग्रेजी जुबानी नहीं सिखाते हैं, बल्कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी सिखाते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला का बहुत फजल करम व एहसान है कि आज अल्फ़ा इंग्लिश अकेडमी का हमने जम्मू और कश्मीर में चौथा ब्रांच ओपन किया है, जो कि हार्ट ऑफ कश्मीर श्रीनगर के दरगाह हज़रत बल सदरबल में है. और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रगुजार अल्लाह ताला का और तमाम साथी का अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ. और अल्फ़ा इंग्लिश अकेडमी का ये मिशन ही है कि वी आर क्राफ्टिंग द फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स एंड डायनेमिक पब्लिक स्पीकर्स इन द वैली ऑफ J&K. अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म में हम ये बिलीव करते हैं कि हमें हर एक प्रोफेशन को, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयज़ हो, टीचर्स हो, बिजनेसमैन हो, जो कोई भी प्रोफेशनल है, हम उनमें इम्पार्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स और कैरेक्टर बिल्डिंग. हमारा मिशन ही यही है कि जो भी हर एक प्रोफेशनल है उसकी जो बेस्ट पोटेंशियल है उसको हम सॉर्ट आउट करें. यहाँ पर उसको हम रियल उसकी जो पोटेंशियल है उसको यहाँ पर हम उसमें हेल्प करें, उसको डिलीवर करने में. और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये एकेडमी है, यहाँ पर हम सबका वेलकम करते हैं कि जिसको भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, जिसको भी अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेना है, तो हमारे अल्फ़ा इंग्लिश अकेडमी आप सबके लिए ओपन है. हमारा एड्रेस है दरगाह हज़रत बल सदरबल नियर कश्मीर यूनिवर्सिटी. थैंक यू वेरी मच.